Good morning, sir. Good morning, madam. Respected dignitaries on the dais, teachers, parents, and my dear students, a warm welcome to one and all on this eventful day of the 73rd Republic Day of our country. India is basking in the glory of independence on 26th of Jan 1950, which comes to 72nd year. We are going to start with the 73rd year this year of our republic. So we have gathered over here to observe, celebrate, and give our respect to this country on this 73rd Republic Day of our country. Let's start the event with the unfurling of the national flag, and I would request the members of the management to please unfurl the flag and give the program a start. I would request David, sir, the director of the institution, Dr. Oman David, to please unfurl the flag and give the program a start. I would request all to stand up and salute the national tricolor, which is the pride of our country. All of you can.
Now today the temperature has gone literally below 12 degrees, due to which we are facing this rough weather. There is some turbulence, I can say. So please be comfortable in this particular atmosphere. And now this year the Republic Day is celebrated under the banner of Azadi Ka Amrit Mahotsav, which means 75 years of independence. Under this umbrella, we are celebrating the 73rd Republic Day of our country. Now to go ahead. Yes, sir. Now, Holy Angels School and Junior College has an efficient management consisting of educationists and experts in the field of education. Dombivli had its first CBSE school, CBSE curriculum in Holy Angels. Later on, other schools followed. So I can tell with great pride that we are the pioneers in starting the CBSE curriculum. So can I hear claps for this? Holy Angels is the first school in Dombivli to have a CBSE curriculum. Today being the 73rd Republic Day when the Constitution was formed, we are eager to have a message from one of the members of the management, the efficient principal Vijay Oman sir, who is always up to one or the other innovative ideas to bring development in the field of education and define the personality of the students. So I would request Vijay sir to please give the Republic Day message. Honorable Managing Trustee of the institution, Mrs. Leela Oman, respected Director Sir, Dr. Oman David, Headmistress, Mrs. Rafat Sheikh, Coordinator, Mrs. Lata Narayanan, revered teachers, members of the non-teaching staff, students present here, parents present here, and all the students and parents watching live online. I have great pleasure to extend to all of you greetings and good wishes on the glorious occasion of the 73rd Republic Day of our nation. This year, our nation's celebrations are being held under the ambit of Azadi Ka Amrit Mahotsav to commemorate 75 years of progressive India and the glorious history of its people, its culture, and achievements. On this solemn occasion, our thoughts go back to the father of the nation, who lived and died for the freedom and unity of our nation, and also to Netaji Subhash Chandra Bose, whose 125th birth anniversary we observed 3 days back, and also to all the men and women who followed them and faced immense hardships and sufferings in the heroic struggle for independence. The Republic Day is a major milestone in the nation's journey along the path of democracy, which the nation adopted on the 26th of January 1950. It was on this day, in that year, that the essence of us as a nation took formal shape. The act of framing the Constitution puts a spotlight on Dr. B.R. Ambedkar, whose sharp insights
helped in framing this very important document. Let us not forget that it is under the flexible provisions of this constitution that democracy has flourished in our nation for the last 72 years. India today is the fourth largest economy in the world. We must be proud of our culture, our traditions, our customs, our religions, our languages that make up this wonderful multicultural country. As Indians, we undoubtedly have many identities, but the underlying common identity is that of being an Indian. We may hail from different regions, belong to different castes, or speak different languages, but that cannot dilute our Indian identity. Today is also a reminder that upholding the values, determining the direction, and propelling the growth of our nation is a task that must be fulfilled by each and every citizen of this country. Dear students, have faith in your nation, have faith in the power of your nation, and never underestimate the worth of your nation. You too have a major role. You have to create a movement of making your own home righteous, of keeping your environment clean, and of excelling in studies. Acquire knowledge and become brightly burning candles so that you can light up other candles. Presently, our university education system is contributing 3 million graduates and postgraduates every year. And students seeking employment after class 10 and class 12 is about 7 million. So you see that there are nearly 10 million educated youth that are being generated by our country every year. Dear students, the 21st century that we are living in right now is predominantly a young India. India is fortunate to have 600 million youth among its 1 billion plus people. There is surely an immense untapped potential in our youth, and this must be channelized for constructive purposes in order to bring about a positive change. The spirit of the Indian youth should be encouraged because you are the nation's pride and its future. I recall here the ringing words of Swami Vivekanand in his book, in his essay, The Future of India. He says, our India is the same India which has withstood the shocks of centuries, of hundreds of foreign invasions, of hundreds of upheavals. It is the same land which stands firmer than any rock in the world, with its undying vigor. Its life is just like the soul, without beginning and without end. It's immortal. And we are the children of such a country. This Indianness is what we should celebrate and further strengthen. Today, telecom connectivity, internet connectivity, and the IT revolution has rapidly modernized our economy and society. But we should place a far more importance on another connectivity effort, the connectivity of the hearts and minds of a billion Indians. No nation has ever attained greatness without first achieving success in awakening and organizing its people. Unity of minds, unity of purpose, and unity in action. That is what we have to demonstrate in every sphere of our national life. Developed India is not the mission of any one political party or any one government. It is the mission of a billion people. For our nation to rise and claim its glorious destiny, we must realize that it is us and our billion hands that can shape it. As Indians who are living in India
and the 25 million odd people of Indian origin who are living in various parts of the planet, let us pledge to uphold the promise of the Constitution and conduct ourselves in a manner so that we can be proud of our country and proud to be known as Indians all over the world. I am confident that each and every member of the bright and sparkling India who are sitting right in front of me today will take his or her life as a mission towards creating a progressive and a prosperous India. And in this endeavor, I am sure Almighty the God is with us. Jai Hind. A lovely message saying there should be more of connectivity of minds and thoughts. Amazing. Yeah, India is undergoing, rather, the entire world is undergoing a very hard time. Pandemic, there are lots of restrictions and there are lots of limitations in the lives of people. Still, we are celebrating the 73rd Republic Day. I think it is really the mercy of the Almighty. So let's pray for more and more good things to happen in our lives. Now we are going to witness a skit by the students of Standard 10th. A skit which says everything about India, about the powerful defense of India, and so on. So let's get ready for this wonderful skit by the students of Standard 10th. I would request the members of the management to please witness the skit. Now let me tell you something. CBSE has made it mandatory that all the CBSE schools throughout the world should have a proper celebration of the 73rd Republic Day. There should be a number of songs, skits which will highlight the defense, how India is quite equipped when it comes to the defense aspect. So the children of standard 10th, in spite of their hectic schedule, overnight they have prepared this kit. So please put your hands together first to encourage the children. It was not that difficult. They had a number of technology wise, they are very strong. Especially, I would like to highlight the students of standard 10 script, preparing of the skit, costumes, everything was done overnight. That too, in spite of their hectic schedule, they are having their exams. They had their exams. Parents, I wish to really appreciate the large-heartedness of the parents who cooperated with us. So a big hand for the parent community for this cooperation. Otherwise, it would have been a bit difficult. Now, many schools, they don't celebrate, they have a virtual celebration as we had last year. Luckily, this year we are able to meet each other. We are able to hoist the flag. Rather than hoist, I would use the word unfurl. And if you remember, I had used the word unfurl, which is the right word to be used on the Republic Day. Flag is hoisted on Independence Day and it is unfurled on Republic Day. So these are the words to be used. Many a times we overlook, but these are the right words. I hope you remember it for the next Republic Day. Now coming to the skit aspect, please watch minutely everything that has happened in India for the in the previous years and how India managed to tackle all those things are being told in the skit. There is a narrator. There are a number of children who have taken part. And yesterday, you won't believe, till 6, 7, they were 6 p.m. in the evening. They were working over here until night 2 and 3. They were working online and offline both. So big, large, or round of applause to the students for their energy, for their enthusiasm. Really, we should appreciate. And technology-wise, the children are so good. Everything is being streamed online on YouTube. There are more than 1,000 parents sitting at home on this chilly morning and watching this event. So I think kudos or hats off to these students for their innovative thinking.
First of all, I would like to wish everybody present over here a very, very happy Republic Day. It's 26th January today, the historical day to remember our national heroes and freedom fighters who suffered to give us a republic nation. Our late Honorable Prime Minister Jawaharlal Nehru said, "At the stroke of midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom." At the stroke of midnight, the first speech of an independent India was delivered by a respected late Prime Minister Jawaharlal Nehru. A free bird named India was uncaged from the colonial rule and soared high up in the open sky and kept on flying up the globe. Later, in the 1960s, a trap was set to capture this flying bird. A battle was laid out of blood. This free bird, unfortunately, was injured heavily. This blood battle was the Sino Indian War. This war was a mighty blow in the developing history of India, and India collapsed. India stood up again and traveled on the path of development, passing through various hurdles. While India was trying to process its progress in the field of nuclear weapons, satellites of the neighboring states were hovering over them like a hawk, eyeing them with an eagle's eye. As you know, India never takes a step back in defeat. In 1998, India successfully tested 5 nuclear bombs, proving that it cannot be oppressed. This was just the start, an era of hope. As we say, आंधियां तो हर वक्त आती है, उन्हें चीर के आना हमें आना चाहिए. One such storm was waiting ahead in India's way. This was a bitter Kargil war of 1999. There was a bloodshed, there was a war. We lost many, we won dignity. Heroes were fighting like lions, strong and brave, and these lions destroyed the enemy to rejoice the victory. India was not only achieving success in the defense department but also in aeronautics. India, in the year 2013, successfully launched its first Indian satellite, Mangalyaan, which was made in India. India is the first country in the whole Asia to reach Mars in first attempt, becoming one of its own types. ये हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा ये नया हिंदुस्तान है ये जवाब देगा These words were true because India bounced back on the creator of her wounds, avenging for her life of her martyred sons by launching Uri, the surgical strike. India steadily was heading on the path of self reliance. On this path of self dependence, India started exploring its own capability. One such example is of Chandrayaan 2, a mission initiated by ISRO, where India took a significant leap in the technological field. She made her way to the southern pole of the moon, although the mission was not a total success. Not only in defense and aeronautics, but also in medicines. India achieved triumph in defeating COVID 19 by producing an initial vaccine, that is, Covaxin. India has come a long way, being Atmanirbhar is one of its own dreams. She is on her way to develop, so let's help her to stand upon her own. Let the day come soon when we straighten up our science spines and proudly say, we are Indians. मेरा देश है आज का आत्मनिर्भर भारत. By this, I as a soldier would want my nation India on the peak of self-dependence. सोच को सच में बदलते देर नहीं लगती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती भारत माता की जय वंदे वंदे थैंक यू I hope you got a glimpse of the country and how good India is, how good India tackled all these adversities. So please put your hands together once again for these lovely students of 10th who could bring a history of India just overnight, one night preparation. They did not have a lot of time. Within minutes, they had that much of guts and courage to present to you the history of India. Can I have all those students on the stage, including Komal and Abdul? Can I have them on the stage who had really prepared a lot for this lovely skit? Before this, please, can I have all the children, please come over for a minute, come first. Those who were in the skit, please, can you come over here? Skit children, can you come over here for a minute, please? Arranging for costumes, arranging for the skit,
dialogue, script, everything was a bit difficult. Still, we got a glimpse how India has come till date fighting the dreadful COVID. So I think India is really great, more so the Indians. So can I have those children over here for a minute, and can I hear claps for them for this wonderful skit and for this wonderful performance, which was very short, sweet, and meaningful. Especially Mother India. She was very happy, and that happiness is really shared by all of us. Thank you so much. The director, the actors, directors, producers, all over here. So hats off to you, children. Now standard 6 to 8. Even they have taken some initiative to wish us all a happy Republic Day through a lovely song which glorifies India and the beauty of India. So let us hear this wonderful patriotic song from the students of 6 to 8. वतन की हमसे है हिम्मत वतन की हमसे है इज्जत वतन की हमसे है इंसान की हम रखवाले ताकत वतन की हमसे है हिम्मत वतन की हमसे है इज्जत वतन की हमसे है इंसान की हम रखवाले पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के ताकत वतन की हमसे है हिम्मत वतन की हमसे है इज्जत वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले सीना है फौलाद का अपना फूलों जैसा दिल है तन में विंध्याचल का बल है मन में ताजमहल है सीना है फौलाद का अपना फूलों जैसा दिल है तन में विंध्याचल का बल है मन में ताजमहल है ताकत वतन की हमसे है हिम्मत वतन की हमसे है इज्जत वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले ला 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 It was really good, which said, yeah, we do have an internal strength. I think we should make use of it. Now, coming to the speech aspect, yeah, every patriotic event does require some speeches which should highlight the importance of the day. Accordingly, Saish of Standard 10th would be highlighting the importance of the day through a speech in English.
Hello, one and all present over here. Respected dignitaries, teachers, and all my brothers and brothers and sisters. First of all, I would like to wish you all a very happy Republic Day. So, as you all know, it is an important day for all the Indians. But when we hear But when we hear few fellow Indians talk about the fear of losing basic rights which our constitution has given us, the day becomes more important. Republic Day is celebrated on 26th January every year. On this day, in 1950, the Constitution of India came into effect. A constitution gives us various rights and responsibilities too. It is truly said, however good a constitution may be, if those who are implementing it are not good, then it will prove to be bad. However, however maybe a constitution however maybe a constitution may be of those who are implementing it are good, it will be proved to be good. But the father of a constitution, Dr. Baba Sahib Ambedkar, we live in a democratic country where people enjoy the fundamental rights. In society, we have different castes and different religions or many other things they separate us. But on a broader picture, we all are Indians. India is a land which is a great example of unity in diversity. The beauty of a country is we all have different language and different religions, and we also have conflicts and differences. But on national festivals, we all come together and stand together as a united force. India has the world's largest volunteer military of over 51 lakhs. The defense minister Rajnath Singh had stated in 2021 that India was ready to export different types of missile systems, light combat aircraft, helicopters, multi-purpose light transport aircraft, various warships and patrol vessels, artillery gun systems, tanks, radars, military vehicles, electronic warfare systems, and other weapon systems to Indian Ocean region countries. To honor the Indian military forces, the government of India gave gallantry awards to the military officers. Indian Air Force pilot Wing Commander Abhinandan Vartaman, who shot down a Pakistani F-16 jet in Balakot, was awarded the Veer Chakra by President Ramnath Kovind. Vartaman shot down a Pakistani F-16 fighter jet during an aerial combat on February 27, a day after the Balakot strike, and to many other brave Indian soldiers. At last, I would like to conclude the speech with our flags not only fly because the wind blows it, it flies with the last breath of each soldier who died protecting it. Thank you. Thank you so much, Saish. I think the stress had made him a bit nervous because throughout night these children were working for the success of today's program. So anyway, it was a lovely speech where he said, "Yeah, we are developing technology-wise, defense-wise. India is developing a lot." Now coming to the next, it is a lovely poem recitation by two students of Standard 9. Janvi and Chinmay from 9th are over here to recite a poem and wish all of us a happy Republic Day. नमस्कार, मेरा नाम चिन्मय सुनील ठाकरे। नमस्कार, मेरा नाम जानवी अतुल महाजन। आज 26 जनवरी आज गणतंत्र दिवस। सन 1947 में हमारे भारत देश को आज़ादी मिली थी और सन 2022 को हमारे भारत देश को आज़ाद हुए 75 साल पूरे हुए हैं। इस उपलक्ष्य में हमारा भारत देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित इस कार्यक्रम में हंसते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों, स्वातंत्र सैनिकों और क्रांतिकारकों की वीरता और उनके बलिदान को याद करके उनके जीवन से हमें भी काफी प्रेरणा मिलती है। राष्ट्र के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए, स्वाधीनता के लिए इन लोगों ने जो किया है उसका मूल हम शब्दों से नहीं चुका सकते। देश की स्वतंत्रता आज भी अबाधित है तो सीमाओं पर लड़ने वाले उन जाबाज सिपाहियों के ही कारण। आज हमारा तिरंगा इतनी शान से लहरा रहा है तो हमारे इन जाबाज सिपाहियों की वजह से। आज हम अपने देश में शांति और अमन के साथ रह रहे हैं तो हमारे जवानों की वजह से।
उन्हीं सिपाहियों को हम उनकी गाथा हम एक कविता के स्वरूप आपसे प्रस्तुत करना चाहते हैं। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। 9 दिन भी मैं बर्फ में दफन होकर जिंदा निकलता हूँ। कड़ाके की ठंड में भी मैं राइफल टांगे पहले निकलता हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद में तन्हाई में जाका लाता है। मुझे राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है। मेरी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया। मेरे पिताजी मेरे इंतजार करते बूढ़े हो गए। मेरी बीवी सिंदूर लगाकर भी लगती कुंवारी है। मैंने सबूलत का गला घोटा है, जरूरत नकारी है। हाँ, मैं निर्दयी हूँ। हाँ, मैं निर्दयी हूँ। मैं अपने उजड़ते घरों आंगनों से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। धन्यवाद। जय हिंद। It was really a short and sweet message. Yeah, India, we have the youth is going to bring about the development of our country. Now, going ahead, Marathi, a speech in Marathi, rather, greetings in Marathi by Soumya of Standard 9. Before this, let me tell you something very interesting. David sir always had a dream that our students, the students of our school, should reach great heights. And it has happened. Many have reached great heights. One of the remarkable things that has happened is one of the students of our school, uh, Nikhil Shirsagar, okay, he has become an army man. Rather, he has joined the military. He is a gunner in the army. And just 2 days back, we had an interaction with him. The video will be shown very soon. We had a nice interaction. He is posted on the Leh Ladakh border and is protecting our country. So I think it is a matter of privilege and pride to know that one of the students of Holy Angels is responsible for the protection of our country. So it's really a matter of great pride. And I think the credit goes to David sir and his dream. He had always a dream, and this dream has come true. So very soon we are going to see the video of the same, wherein we had an interaction. Even this too, the students of 10th had arranged for a small interaction with Nikhil Shirsagar of a school who was passed out in 2015 batch. And he really gave out such horrifying stories about how difficult it is to be in the military. The restrictions, the rules, the regulations it was too difficult to hear, but then it was very nice. So very soon you are going to see a video about the same. But before that, let us hear Soumya and her greetings in Marathi. रंग बलिदानाचा, रंग सत्य आणि शांततेचा, रंग मातीच्या नात्यांचा. देश विविध रंगाचा, देश विविध रंगाचा. अशा आहे आपला आपुला भारत देश. आदरणीय शिक्षक आणि माझ्या मित्र मैत्रिणींनो, आज प्रजासत्ताक दिनानिमित्त बोलणार आहे. पूर्वी घोडे तलवारी ते आज रणगाडे फायटर प्लेन. आपली वाटचाल आधुनिक शस्त्रांकडे चालली आहे. अर्जुन हा तिसऱ्या पिढीतील भारताचा प्रमुख युद्ध रणगाडा म्हणजेच टँक म्हणून ओळखला जातो, ज्याची निर्मिती संस्था DRDO यांनी केली आहे. या रणगाड्याचे नाव महाभारतातील अर्जुन यांच्यावरून ठेवले आहे. अर्जुनचे 1986 मध्ये संशोधन सुरू झाले आणि 2004 साली तो सैन्य दलात रुजू झाला. रणांगणावर वाटचाल करताना न थांबता शत्रूचा वेध देणारे क्षमता आणि यासाठी वापरात येणाऱ्या कांचन नामक चिलखत हे भारताच्या बनावटीचे आहे. अर्जुन MK2 ही त्याची येणारी सुधारित ते संशोधन सुरू आहे, आवृत्तीचे संशोधन सुरू आहे. अशा अनेक आधुनिक शस्त्रांना उपयोगात आणणारे ते आपले शूर जवान. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय ही युद्ध घोषणा
250 वर्ष जुन्या मराठा लाईट इन्फंट्रीची आहे. मराठा लाईट इन्फंट्री ही एक मानाची रेजिमेंट आहे. ब्रिटिश काळात मुंबईत भारताची स्थापना झाली. त्यावेळी 2 बटालियन होत्या, जंगी पलटण आणि काळी पंचविन. पहिल्या व दुसऱ्या महायुद्धात मोठा पराक्रम गाजवणारी हीच ती मराठा रेजिमेंट. स्वतंत्र भारताच्या प्रत्येक युद्धात मराठा रेजिमेंट शमिला झाली. मग ते इंडो पाक 1947 चे युद्ध असो की ऑपरेशन पवन, ते सगळीकडे आघाडीवरच होते. मराठा रेजिमेंट मधील ब्रिगेडियर सौरभ सिंग शेखावत हे नाव सगळ्यांना ठाऊक असेलच. त्यांना कीर्ती चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल यांनी सुशोभित केले आहे. पण मी आज तुम्हाला मेजर मोहित शर्मा मद्रास रेजिमेंट यांच्याबद्दल सांगणार आहे. कोवळ्या वयाच्या 26व्या वर्षात त्यांना मरणोपरांत अशोक चक्र दिले गेले. 21 मार्च 2009 साली जम्मू काश्मीर मधील अतिरेकी हमल्यात त्यांच्या बरोबरीच्या 2 साथीदारांना वाचवलं व 4 अतिरेक्यांना ठार करताना ते शहीद झाले. त्यांच्या ह्या वीरतेला माझा शतशत प्रणाम. जे देशासाठी लढले ते अमर हुतात्मे झाले. सोडिले सर्व घरदार, त्यागिला मधुर संसार. ज्योतिषम जीवन जगले, ते देशासाठी लढले. जय हिंद. Thank you so much, Soumya. Yeah. Now coming to India does have a good defense. We are proud of the military of our country. Now we are going to have a song by the students of Standard 10th highlighting the beauty of our tricolor. Now I won't be wrong if I say even the technology wise we are very sound. Last 2 years, the entire country had everything online. More so, I would highlight Holy Angel School, where we had online education for the past 1.5-2 years, where every child got proper education. All the activities were conducted, intramural activities. To add more to it, we had a farewell ceremony last year of the 10th standard on a virtual basis. And you won't believe it was so good that the students were emotionally affected by it. They were so happy. They had never expected the batch last year, 10th standard batch. They did not get a chance to come to school, but they had a lovely farewell, virtually arranged. All the teachers gave messages. Students too did their lot, and it was a wonderful success. So I think I can hear claps for the technology aspect of our country, more so of Holy Angels, where no child suffered. Every child had his education. The children reached the next classes, exams were conducted, and everything went on fine in spite of the pandemic, in spite of all the adversities. So I think we can be proud of the technology aspect of our country. Now we have a song which highlights the beauty of the flag. Hello. 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 Hello.
Thank you. It was really an inspiring one. Now, coming to greetings in Hindi, the national language. I would like to call Swayam Telang on the stage to wish everyone in Hindi a happy Republic Day. उपस्थित मान्यवर, हमारे होली एंजल स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर ओमन डेविड सर, ट्रस्टी लीला मैडम, प्रिंसिपल विजय ओमेन सर, हेड मिस्ट्रेस रफत शेख मैडम, लता नारायण मैडम, सम्माननीय शिक्षकगण और मेरे सभी दोस्तों, 26 जनवरी हम सबका गणतंत्र दिवस है। आज हम हमारा देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज के दिन हमारे सरकार ने संपूर्ण देश पर संविधान लागू किया और हमारे देश को गणराज्य और लोकतांत्रिक घोषित किया। हम सब गणतंत्र दिवस हमेशा से ही बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाते हैं, पर क्या कभी किसी ने यह सोचा कि आज ही के दिवस को गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? बहुत कम भारतीयों को इसकी जानकारी है कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों चुना गया है। 26 जनवरी को गणतंत्र रूप के दिवस में इसलिए चुना गया है क्योंकि आज ही के दिन सन 1930 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में रहकर इस पूर्ण देश को पूर्ण स्वराज घोषित किया था और 15 अगस्त 1947 के 2 साल 11 महीने और 18 दिन की लगातार मेहनत से बना हुआ संविधान आज ही के दिन 1950 में इस संपूर्ण भारत को लागू हुआ। जब हम संविधान की बात करें तो आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर हम उस महत्वपूर्ण व्यक्ति को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने हमारे संविधान को पूरा करने में बहुत मेहनत और कष्ट उठाई थी। उस महान व्यक्ति को स्मरण करते हुए मैं कुछ वाक्य कहना चाहता हूँ। नीच समझकर जिस भीम को सब करे देते दुत्कार, कलम उठाकर हाथ में कर गए देश सुधार। जी हाँ दोस्तों, मैं हमारे अपने डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जो पूरे विश्व में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से जाने जाते हैं, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। इनसे ज्यादा हमारे गणतंत्र की बारीकियों को किसने ही देखा होगा। आज के इस गणतंत्र दिवस पर हम सब इन्हें स्मरण करके इनकी मेहनत और देश प्रेम को नमन कर उन भारत के सभी सपूतों को नमन करते हैं जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को इस संविधान को विश्व का एक महान ग्रंथ बनाने में साथ दिया। गणतंत्र दिवस की उमंग मानो पूरे देश में यूं छा जाती है जिससे हर नागरिक अपने आप को बस एक ही नाते से जानता है, वो है उसका अपने वतन के साथ नाता, अपने देश के साथ नाता, और वो सब नातों से परे होकर बस एक ही नाते से जाना जाता है जो है भारतीय। आज मैं पर आप सबको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आज हम संविधान के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं, पर क्या हम इस संविधान को सच में अपनाते हैं? हम अगर इस संविधान को सच में अपनाते तो शायद आज इस संविधान के बारे में हमारे दिल में इज्जत होती, हम सभी को समान हक दे पाते, धर्म के नाम पर यहाँ पे दंगे फसाद नहीं होते और जिसके वजह से बहुत सी लोगों की जानें नहीं जाती। हमारा संविधान बनाया ही इसलिए गया था ताकि सबको समान अधिकार मिल पाए। हमारे संविधान के सामने कोई छोटा या बड़ा नहीं, कोई अमीर या गरीब नहीं, बल्कि सब समान है। हमने हमेशा ही संविधान के बंटवारे किए हैं, उससे गलत मतलब से अपनाया है और यही कारण है आज हमारा देश शायद उन्नति नहीं कर पा रहा है, बल्कि हमारा देश उन्नति कर रहा है। और यह भी सच है कि हमारे देश ने आत्मनिर्भर भारत की ओर अपना पहला कदम भी उठा लिया है, परंतु बाकी देशों के मुताबिक हमारे देश की गति उन्नति की अगर हमें बढ़ानी होगी तो हमें सबसे पहले हमारे अपने लोगों को नीचा न दिखाकर उन्हें समान रूप से देखकर उन्हें एक साथ रहकर आगे बढ़ना होगा। उन्नति का सबसे उत्तम उदाहरण तो हम हमारे रक्षा क्षेत्र से ही ले सकते हैं। आज हमारे सेना में कितने पंजाब और सिख भाइयों ने बिना कुछ सोचे समझे इस देश की उन्नति के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए अपने जानों की कुर्बानी दे दी। आज हम उन्हीं सबको नमन करते हैं जिनके वजह से आज हम हमारे घरों में सुरक्षित हैं। आज हमारी इन्हीं सेनाओं में से अनेक शौर्यवीर जवानों को अनेक पुरस्कारों से सरकार ने और हमारे देश ने नवाजा है, जैसे कि परमवीर चक्र पुरस्कार, अशोक चक्र पुरस्कार, वीर चक्र पुरस्कार। उनमें से कुछ जाने माने नाम है: मेजर सोमनाथ शर्मा, कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार पांडे, नायब सूबेदार बनास सिंह।
जैसे अनेक शूरवीरों ने हमारे देश के लिए बहुत मेहनत उठाई और कुर्बानियां दी। जाते जाते मैं बस इतना ही कहूंगा, बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ। गौर कीजिए, बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ। आज सलाम कर उन वीरों को जिनकी शहादत से भारत गणतंत्र हुआ। जय हिंद, जय भारत। Yeah, it is a fact that India has the longest constitution, which took a long time to be framed. In spite of this chilly weather, we are having cyclones in some parts of the country, unseasonal rains due to which Mumbai is getting affected. Still, in spite of this chilly weather, I could see a good crowd over here, some parents, enthusiastic parents, of course, active children all over here, and we did pay homage to all the leaders who helped us to frame the constitution, who gave us a good constitution, and hope we safeguard it. That is our responsibility and our duty. Now, the event is not yet over. There are some videos which will be shown in the auditorium, which is specifically prepared by the student community, I should say. And there is an interaction with Nikhil Shirsagar, one of our ex-students who is the pride of the country. So we are going to see some videos in the auditorium. So before that, a formal vote of thanks. Actually, such patriotic programs need not have a vote of thanks. It is our duty to assemble. It is our duty to pay homage to the leaders, pay respect to the flag in spite of all the adversities. Last year we could not do it, but this year we could do it. So I think somewhere good things are happening. So let us hope for more and more good things to happen, better things to come, and maybe get good days again. So have a nice day. God bless. I would request everyone to move towards the auditorium for the video viewing. And let me also tell you, there are some parents, some children seated in the cozy room of their houses where they are viewing this online. So somewhere the technology really has to be appreciated again. We have given this facility to the parents and the small children who are not able to make it today. So they are seated at home, but they are really enjoying with us. So thanks to them too. So have a nice day. God bless. So let us continue with the video thing. So I would request everyone to move towards the auditorium. Thank you so much.
पास हुआ, अब कुछ तो करके दिखाना। मेरे बहुत से फ्रेंड्स ऐसे थे जो 28 के हो गए, 29 के हो गए, 30, 32 के हो गए, शादी हो गई पर जॉब नहीं है, कहीं जॉब नहीं है ना कहीं रिस्पेक्ट है। तब एक ही दिखा कि हाँ पापा मेरे आर्मी बैकग्राउंड से थे, पर इतना कभी इंटरेस्ट नहीं दिया देखते। और एक और इंटरेस्टिंग बात उसमें उस टाइम पे आ गया उरी अटैक मूवी, पूरी मूवी वो देख के खुद को मोटिवेट किया। रोज सुबह उठना, तैयार होना अगले दिन के लिए, प्रैक्टिस करना दबा के। एक साल मेरा पूरा प्रॉपर अपने लिए टाइम निकाला पूरा, ना कोई रिलेटिव, ना फ्रेंड्स, ना कुछ, ना सोशल मीडिया। एक साल के लिए पूरा गायब हो गया। किस चीज ने आपको भारतीय सेना में शामिल होने के लिए प्रभावित किया है? एक्चुअली देखा जाए तो मैं पहले से इंटरेस्टेड नहीं था इतना आर्मी में ज्वाइन होने के लिए। जैसे सारे टीचर्स लोग जानते हैं कि मैं भी जानती अच्छे से मेरे लिए कि मैं बहुत मस्ती करता था। मतलब हर 2 दिन बाद वीडियो सर के पास खड़ा होना, हर पहले दिन क्लास के बाहर मेरी टीचर आती ही क्लास से बाहर, इतना मस्ती करता बहुत। मैं कभी अपनी लाइफ को सीरियस नहीं लिया। कुछ नहीं कर पाएगा, भगवान कसम बता रहा हूँ, कुछ नहीं कर पाएगा। सुबह इतने बजे उठता है, उतने बजे सोता है, कुछ नहीं करता। जब मालूम पड़ा कि आप 11th फेल हुआ, 12th दी, इसी कॉलेज से दिया, 70 नंबर फॉर्म भर के 12th पास हुआ। उसके बाद खुद को एक टाइम दिया। आजकल के लड़के यही कम करते हैं, पूरे सबके लिए टाइम निकाल देते हैं। आज की जो युवा पीढ़ी है, मैंने बुलाया, अरे निखिल का बर्थडे, निखिल के बर्थडे उसके लिए 2 घंटे टाइम दे देंगे, पर खुद के लिए कभी टाइम नहीं देते। आजकल की युवा पीढ़ी की यही कमी है, जो खुद को टाइम नहीं देते। खुद को टाइम दो, मैंने वही किया। मैं 12th अब कुछ तो करके दिखाना। मेरे बहुत से फ्रेंड्स ऐसे थे जो 28 के हो गए, 29 के हो गए, 30, 32 के हो गए, शादी हो गई पर जॉब नहीं है, कहीं जॉब नहीं है ना कहीं रिस्पेक्ट है। तब एक ही दिखा कि हाँ पापा मेरे आर्मी बैकग्राउंड से थे, पर इतना कभी इंटरेस्ट नहीं दिया देखते। और एक और इंटरेस्टिंग बात उसमें उस टाइम पे आ गया उरी अटैक मूवी, पूरी मूवी वो देख के खुद को मोटिवेट किया। रोज सुबह उठना, तैयार होना अगले दिन के लिए, प्रैक्टिस करना दबा के। एक साल मेरा पूरा प्रॉपर अपने लिए टाइम निकाला पूरा, ना कोई रिलेटिव, ना फ्रेंड्स, ना कुछ, ना सोशल मीडिया। एक साल के लिए पूरा गायब हो गया। आप कौन से गन्स और मिसाइल से डील करते हैं? आर्मी एयर डिफेंस एक आर्मी का सबसे टेक्निकल डिपार्टमेंट है, जिसमें बहुत सारी गन्स आती है। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स में जितनी भी आती है, जैसे चिल्का हो गई, चिल्का बोलते हैं जैसे, 4 बैरल एंटी एयरक्राफ्ट गन है। वो टैंक माउंटेन गन है पूरी। जैसे मेरी जेडयू, जिस गन का मैं ऑपरेटर हूँ, जेडयू गन, विनस्ती गुप्सनो का 23 mm के ट्विन बैरल गन, उसका रेट ऑफ फायर 1600 से 2000, 1600 to 2000 राउंड पर मिनट बोथ बैरल। मतलब सोच लो, 1 मिनट में उस 2000 राउंड फायर कर रही है। अगर स्लो मोशन में अगर किया जाए, उसको डिवाइड किया जाए, तो 1 सेकंड में वो बैरल 17 राउंड फायर कर रहा है। 1 सेकंड में 17 बार। मतलब वो पीछे से राउंड लेगा, चेंबर में ब्लॉक करेगा, फायरिंग की चोट मारेगी, गैस प्रोड्यूस होगी, राउंड आगे जाएगा, खाली केस वापस इजेक्ट करेगा 1 सेकंड में 17 टाइम्स। तो अपने पास इतने टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। आकाश, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, ये मिसाइल्स है। अब इसमें से जो आकाश मिसाइल है, वो इंडियन आर्मी की एयर डिफेंस, आर्मी एयर डिफेंस, वो डील करती है इसके साथ। अगर इसकी जरूरत पड़ी
तो ये आर्मी एडी से आकाश मिसाइल को फायर करेगी। कहीं एडी प्रोटेक्शन देना है तो जेडीयू गन, ये डिपेंड करता है कि लोकेशन कैसी है, हमें किसको प्रोटेक्शन है, उस हिसाब से गन्स लगती है। जैसे L70, QF L70 ये सारी रशियन मेड है, टंगुस्का, ओसा AK, ये सारी मिसाइल्स और गन्स के नाम है। हम इससे पूरा डील करते हैं, पूरी ट्रेनिंग इस पे चलती है हमारी। जेडयू गन के टेक्निकल्स के बारे में आप कुछ बताएं। जेडयू गन का, जेडयू गन एक एंटी एयरक्राफ्ट ट्विन बैरल लाइट वेट गन है जो कहीं पे भी आसानी से लेके जा सकते हैं। लाइट एडी और एडी में यही डिफरेंस है, एडी में हैवी वेपन्स आते हैं और लाइट में, लाइट मतलब नाम में उसके समझ लो लाइट है करके, लाइट है। ये सबसे बेस्ट गन में बोला जाए तो सबसे बेस्ट है। ये एयर रोल में भी ये यूज की जाती है और ये ग्राउंड अटैक में भी सब बहुत सक्सेसफुल है। ये सामने टारगेट को 5 किलोमीटर तक एंगेज कर सकती है। ये एक्चुअली देखा जाए ये टैंक जो होते हैं, जैसे घाटा सर्कल पे देखे हमने टैंक, इसके जो चेन है उसको तोड़ने के लिए यूज किया जाता है। इसके जो राउंड्स है, राउंड्स में इसके टाइप्स होते हैं, HE राउंड, AP राउंड, HE AP DC। HE जो होता है वो हाई एक्सप्लोसिव होता है, जो टारगेट को लगते ही खुद भी डैमेज होता है और टारगेट को भी डैमेज करता है। HE हाई एक्सप्लोसिव, इसके अंदर बारूद भरा जाता है। और जो AP राउंड होता है वो आर्मर पियर्सिंग, जो आर्मर होता है लोहा, 20 mm तक के लोहे को ये शील्ड को फाड़ सकता है, उसके लिए यूज किया जाता है AP राउंड। और DC जो होता है डीप ओपनिंग, अभी बैरल कंटिन्यूस यूज हो रहा है, उसके अंदर से कंटिन्यू फायरिंग हो रही है और उसके अंदर कार्बन जमा हो रहा है। वो तो DC राउंड वही करता है कि DC राउंड पूरी गंदगी लेके साफ हो जाता है, तो उसके लिए अच्छे से क्लीन हो जाती है और फायरिंग में कोई इफेक्ट नहीं आता, तो बहुत बेस्ट गन देखा जाए। जैसे कि आपके पिता भी सेना से थे, तो आपने उनसे सेना के लाइफ के बारे में क्या सीखा और आपको उससे क्या मदद मिली सेना के लाइफ में? पापा भी आर्मी में थे, पर कभी इतना पापा और मेरे में डिस्कशन नहीं होता था कि तू आर्मी में ऐसा होता है, आर्मी में वैसा होता है, कभी इतना डिस्कशन नहीं होता था। पर अगर देखा जाए ना तो मेरे फ्रेंड से पहले मेरे पापा मेरे पहले फ्रेंड है। जिस टाइम पे मैं पढ़ाई करता था रात को, मेरा पापा को अगले दिन ड्यूटी जाना रहता था। यही अभी रिटायर हो गए थे, टोरेंट पावर करके तो कंपनी थी, वहाँ पे काम जॉब के लिए जाते थे। दूसरे दिन सुबह जॉब पे जाना रहता था, फिर भी मेरे पापा रात को अगर देख रहा हूँ कि मैं 1 बजे पढ़ रहा हूँ, 1 बजे जो बैठते थे मेरे पास, सुबह 3 बजे तक मेरे पापा मेरे साथ कंटिन्यूस बैठे, मेरा बुक साइड में रख देते थे खुद हाथ से, और बस मेरे साथ ऐसी बातें, बस गप्पे लड़ाते, कि उन्हें दिख रहा था कि लड़का कर रहा है, पूरा 100% दे रहा है। मैं देखा जाए ना तो पापा को मैं बहुत ये नेगलेक्ट करता था, मेरे को बिल्कुल पसंद था पापा मेरी टुकाई करते बार बार, हर बात पे टुकाई, बैठते हुए टुकाई, हेयर कटिंग ऐसा क्यों, कपड़ा तूने ऐसा क्यों पहना, हर जगह टुकाई। पर पापा की वैल्यू मेरे को कब मालूम पड़ी, जिस टाइम पे मैं अपनी आर्मी रैली के लिए गया, मेरी 9th रैली थी, मैं अपने पापा को बोला, पापा इस बार आप मेरे साथ चलो, इस बार मैं आपको प्राउड फील करा के लाऊंगा उधर से, कुछ भी करके। मैं अगले दिन मेरी रैली थी, मेरे को अभी भी याद है, मैं 12 जून को मेरी रैली थी 2019 में। 11 जून को मैंने नंबर लगा लिया था गेट पे, 5,500 बंदे थे, सबसे पहला नंबर लगाया था, और दूसरे दिन सुबह रनिंग थी। इतना नंबर लगाने के बाद भी मेरा 8th बैच में, पूरे रश में, क्राउड में मैं आगे पीछे हो गया। 8th बैच में मैं रनिंग पास हुआ। रनिंग के टाइम पे भी मैं फेल हो गया था। इस बार कसम से बता रहा हूँ, मैं इस अटेम्प्ट में पास नहीं होने वाला था। और जो कहते हैं ना एक लाइफ का मूवी आता है, लाइफ का एक शॉर्ट मूवी कभी तो आता है एक लाइफ में। जब मैं दौड़ रहा था, रनिंग कर रहा था अच्छे से, बहुत आगे था, पूरा ताकत लगा देता एकदम स्टार्टिंग में, और आगे और खींचना है, 1 किलोमीटर खींचना है मेरे को, एंड्योरेंस मेरा तब तक के लिए रखना है मेरे को, अपनी पूरी एनर्जी स्टैमिना। पर मैं पूरा खींच रहा था स्टार्टिंग में, मेरे को पूरा, मैं धीरे धीरे पीछे हो गया था, 2 नंबर पे था मैं रनिंग में। मैं धीरे धीरे बंदे आगे जा रहे हैं, एक बंदा आगे जा रहा है, मैं काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5, काउंट करते करते 45 बंदों ने मेरे को क्रॉस किया। 100 बंदों में से 100 के बैच छोड़ते मेरे को 45 बंदों ने क्रॉस किया। राइट साइड में मेरे ही ड्रिल ग्राउंड आया, जिसमें कसम परेड की जाती है, जो देखते हैं, इसमें ड्रिल की जाती है पूरी, इसमें अनुशासन सिखाया जाता है, ड्रिल ग्राउंड। उसमें बंदों का आवाज सुन के, जोश सुन के, कसम से बता रहा हूँ, मेरे को एक 30 सेकंड की एक मूवी दिख गई थी फ्यूचर की, कि मेरी मम्मी मेरे को मेडल पहना रही है, मेरे पापा उधर खड़े हैं प्राउडली, जो हमारा ब्रिगेडियर है वो पापा को मेडल पहना रहे, कांग्रेस कर रहा है।
वो 30 सेकंड में पूरी मूवी दिख रही थी कि मैं उधर कसम खा रहा था कि मैं देश का सफाई आग अग्नि पृथ्वी हर जगह से जाने के लिए तैयार हूँ। 30 सेकंड में मैंने देख लिया था। तब जो मैंने अपनी एनर्जी में बोला, आज तो निखिल तू उधर मर जाती है फिनिशिंग लाइन पे, चलेगा। पर पापा बाहर खड़े, उनको डिमोटिवेट नहीं करना है, प्राउडली जाना है। जैसे ही क्रॉस किया धीरे 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 वापस 45 बनने मेरे को क्रॉस करने में टाइम लग गया बहुत, मेरी जान निकल गई थी। मैं जाके उधर सीधा सो गया था। 10 मिनट मेरे को कुछ नहीं समझा था, मेरा पूरा गला इंटेस्टाइन मेरा पूरा सूख गया था, पानी मांग रहा था, उधर पानी नहीं मिल रहा। तो पूरा दिन मेरा वैसे गया, पुलअप्स हुए, आगे के फिजिकल टेस्ट हुए। उसके बाद मेरे पूरे इतने मैंने पूरी ताकत लगा दी थी, मेरे गले से लेके मेरा रिब्स, थाइज, काफ, हर एक चीज जाम हो गई थी मेरी। मेरे को चलने के लिए भी नहीं हो रहा था, ऐसी हालत हो गई थी। बस मेरी टेस्ट के टाइम पे डॉक्यूमेंटेशन हुआ, रात को 11:30 बज गया। जैसे ही 11:30 बजे गेट के बाहर निकलते 12 साढ़े 12 के आसपास कुछ तो हो गया था। बहुत से मेरे फ्रेंड्स थे जिनके फादर भी आए थे उनके साथ, पर इतने बंदों में से किसी के फादर गेट पे खड़े नहीं थे कि मेरा लड़का आएगा मैं उसको लूंगा। बस मैंने उतने पापाओं में से अपना पापा देखा जो एक हाथ में पानी का बोतल और एक हाथ में खाने का प्लेट लेके खड़ा था। तब मेरे को बाप का एहसास हुआ कि भाई बाप अपनी लाइफ में क्या वैल्यू करता है। बच्चे और युवा वर्ग कल्पना जग में एक्शन हीरो को ही अपना आइडल मानते हैं, लेकिन सही मायने में एक सच्चा सिपाही जो जीवन में कितना कष्ट सहता है और जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार हो जाता है, उसी सैनिक से बच्चों को प्रेरित होना चाहिए। इस विषय में आपका युवा पीढ़ी को क्या संदेश है? मैं तो ये मानता हूँ कि हर एक बंदे ने, पता नहीं मैं कितना ठीक बोल रहा हूँ कितना रॉन्ग बोल रहा हूँ, हर एक बंदे ने एक बार तो लाइफ में फेल होना चाहिए अगर सक्सेसफुल बनना है। तो अगर आपको सक्सेस ऐसे ही मिलते जाए बस अपने लक पे, आपको उसकी वैल्यू नहीं होगी। आप एक बार फेल होके देखना कभी किसी चीज में जो आपको अचीव करनी है। मैं 8 बार फेल हुआ था, एक बार भी नहीं 8 बार, पर मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। मैं अगले दिन वापस जूता पहनता था, रनिंग स्टार्ट, वापस अगले दिन 25 किलोमीटर करना है तो करना है। क्या हुआ, आज नहीं तो कल, मरे थोड़ी है। अरे हाथ पैर है, मरे थोड़ी है। जो मूवी में दिखाते हैं हीरो क्या कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, उन्हें बस दिखावा है कि हाँ हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मूवी में दिखाया भी है ना कि एक सोल्जर राइफल लेके खड़ा है, देखने में कितना अच्छा लगता है, पर जब वो सोल्जर का ड्रेस पहनते हो, ड्रेस का वेट, नीचे शूज का वेट, सर को पता है शूज का वेट कितना होता है, वो डीएमएस शूज का, सर एनसीसी से थे, कॉटन गाइड के थे, प्लस बुलेट प्रूफ जैकेट। मेरे को एक बंदा कोई तो बोला था भर्ती होने के बाद भी, ये क्या करेगा, होगा कहीं चौक पे खड़ा रहेगा ड्यूटी देता हुआ, ये बोला था। पर उसे नहीं पता कि वो यूनिफॉर्म पहन के जब 9-9 किलो के प्लेट्स लगते ना, यहाँ पे मेटल प्लेट्स 9-9 किलो के, 9 किलो आगे 9 किलो पीछे, प्लस मैगजीन 4, प्लस राइफल 4 किलो की मैगजीन, 18 केजी वो वेट हो गया, प्लस 90 ग्राम्स के मैगजीन आपके, प्लस हेलमेट। जब पूरी दुनिया का बोझ आप पे रहता ना, तब मालूम पड़ता है कि ड्यूटी कैसे देनी चाहते हैं, किसे बोलते हैं। तो जो मूवी में दिखाते हैं वो चलो अच्छी चीज है। अगर आप मूवी देख रहे हो कोई जिसमें वो कोई बन के दिखा रहा है, कुछ आर्मी ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है, तो आप उसको देख के मोटिवेट हो, उसको देख के मोटिवेट हो और वो करो, उसके जैसा मत बनो, खुद अपना अलग बनाओ। आप लोग ये मत सोचो कि मेरे को निखिल के जैसा बनना है। कल को मैं खुद बोलता हूँ, अरे तू तो वही है ना जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था। ये होना चाहिए खुद के अंदर जज्बा कि कल को मेरे टीचर्स लोग प्राउडली बोले कि हाँ मेरा लड़का है। 4 लोगों में खड़े हो तब लगे कि हाँ कोई तो खड़ा है बीच में। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप एक साइड में चुपचाप खड़े रहोगे, कभी भी देखना। पर जिसको नॉलेज है ना, वो 4 लोगों के बीच में खड़ा होकर एकदम फ्लुएंटली बोलता है, एकदम लीडर होके बोलता है वो। तो आजकल की पीढ़ी को यही सीखना चाहिए कि खुद को डिमोटिवेट मत करो। आपको बाकी डिमोटिवेट कर रहे हो ना, वो आपकी एनर्जी है। यहाँ बहुत से टीचर्स को पता है मैं बहुत गुस्से था, एचए मैम को पता है बहुत गुस्से था, मैं बहुत सुन के नहीं लेता था मैं किसी की, पर वही गुस्सा ना मैं ग्राउंड पे निकालता था। 10 पुशअप्स मेरे को ये ऐसे बोला, मैं और 10 पुशअप मारूंगा। जो अपना गुस्सा है, जो मेरा कमजोरी था, मैं उधर उतारता था। रनिंग करना है, अरे
ये बाइक आ गई थी मेरे से, मैं बाइक से रेस लगाता था, पागल हो गया था, पागल। अगर कोई चीज़ करना है तो पूरे पागल बन के करो, पूरा पागल बन जाओ उस चीज़ में, तभी सक्सेसफुल हो पाओगे लाइफ में। और सबसे बढ़िया तो फेलियर, अगर एक्सपीरियंस लेना है तो फेलियर। मेरा खुद छोटा भाई मेरा बढ़कर है, वो 9th पास हो गया, कोविड, 10th पास हो गया, कोविड। मैं बोला अभी 11th में एडमिशन नहीं मिलेगा, बोला, क्योंकि सीईटी के एग्जाम आने वाले थे। सीईटी कैंसिल हो गई, 11th में एडमिशन मिल गया। अभी तो डिक्लेयर कर दिया 11th भी पास करने वाले। और मैं खुद उसका सगा भाई हो के मैं चाहता हूँ कि वो 10th फेल हो जाए, मैं ये चाहता था। क्योंकि उसे मालूम पड़ेगा कि फेलियर क्या चीज़ है। जब वो कोई फेलियर से उठेगा ना, तब उसे मालूम पड़ेगा कि हाँ मैंने कुछ तो किया है करके। मैं बहुत दिल से चाहता हूँ कि वो 10th फेल हो जाए, क्योंकि ऐसे पास होने में कोई मतलब नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है ना कुछ है। अगर मैं अपने ट्रेड के बारे में अगर नॉलेज नहीं रखता, तो मैं अपने जो हमारा सीनियर होता है, जैसे हमारे में भी गनर हूँ, तो हमारा भी एक नंबर 1 होता है, एक जो सीनियर मोस्ट होता है जिसको गन का पूरा नॉलेज होता है, वो गन पूरी खोल के जोड़ देगा, इतना नॉलेज होता है उसे, हर एक नट का उसका नॉलेज होता है। उसे हम लोग हमारे साइड से नंबर 1 बोलते हैं। जैसे अगर मैं तो नंबर 1 सर, यानी ऐसे नंबर 1 आप कैसे हो, नंबर 1 आप खाना खाए, इस प्रकार से बोले, क्योंकि नंबर 1 है हमारा, हमसे बहुत सीनियर है, उसे नॉलेज है। वो भी चाहते हैं कि हाँ मेरा बंदा मेरा सीखे, मेरे से कुछ, मेरे से ट्रेड के बारे में पूछे। तो मैं यही चाहता था कि मेरा भाई फेल हो, क्योंकि वो सीखेगा कि अभी फेल हुआ है। रिलेटिव्स के ताने, जो अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, जो रिलेटिव्स, जो ताने मेरे को खुद बोलते थे मेरे रिलेटिव्स, ये कुछ नहीं कर पाएगा। और जब रिजल्ट लेके दिखाया ना कि भाई पास हो, हमें तो पता था ये कर पाएगा, हम तो ऐसे ही बोलते थे। ये होता है रिलेटिव्स का सबसे बेस्ट। आज की युवा पीढ़ी को तो मैं बोलूँगा, अगर लाइफ में कुछ करना है, रिलेटिव छोड़ दो, बस अपने माँ बाप भाई दोस्त यार छोड़ दो। वो दोस्त देखो, एक ही दोस्त बनाओ, पर 100 के बराबर होना चाहिए। 50 दोस्त बनाए कोई फायदा नहीं, तेरे 50 लोग तेरे पीछे खड़े, कोई फायदा नहीं। एक ही बंदा रख जो गट्स रखे तेरे साथ हर चीज में, लड़ाई में, किसी भी चीज में तेरे साथ रहे, ऐसा दोस्त बनाओ। आजकल की युवा पीढ़ी को यही मैं बताना चाहूंगा कि रिलेटिव छोड़ दो, सबसे पहला तो यही करो सक्सेसफुल होने दो। दुनियादारी छोड़ दो, मतलब ही बोलो, मतलब ही कि नहीं मेरे को करना है, मेरे को पास होना है, बस दूसरे को छोड़ दो यार। मेरे को कुछ तो अचीव करना है, मैं बस अचीव करने के बाद लोग तेरे पीछे आएंगे अपने आप, मतलब ही बन जाओ, सीधा सीधी बात है। तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे।
तेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। हाय तेरी मिट्टी में गुल बन के मैं, इतनी सी है दिल की आरज़ू, वो तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हम भारत के वीर और हम अपने देश के रक्षक, जाति भेदभाव को मिटाएं। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी, फूलों सी वो बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सोचा में बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी, जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। फिर भी संघ तीन रंग का एक एनर्जी का आदर्श वाक्य, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। मजबूर हुई जब दिल की दुआ, तो हमने दवा से काम लिया, वो नब्ज नहीं फिर थमने दी, जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी ये भेद हुआ, सरहद पे जो वर्दी खाकी थी, अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। The message had to go to Pakistan that if you are going to come and hit us on our side, we can also, come across and hit you on your side. रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस
गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना जज्बों की उड़ानों को, रोको ना आंखों के निशानों को। आग जैसे बरसा दे ये इरादे, जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। वो जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनू के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनू की आंख में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जगह जित्ते ते मिलन बधाइयां, जगह जित्ते ते मिलन बधाइयां, जगह जित्ते ते मिलन बधाइयां। के आया है फतेह करके सूरमा, सूरमा के माने है जम्मिया एक सूरमा, सूरमा सूरमा सूरमा। सूरमा सूरमा सूरमा, जगह लिख गया नई कहानी, जगह लिख गया। रोके वो काफी, रुके ना तू तो टोके वो काफी, झुके जरा भी रुकेगी ना पर इनकलाबी। मन है राजी, डरना क्यों अब अपनी बारी, मार ही लेंगे अब तो बाजी। जगह लिख गया नई कहानी, जगह लिख गया। जगह जित्ते ते मिलन बधाइयां, जगह जित्ते ते मिलन बधाइयां। के आया है फतेह करके सूरमा, सूरमा के माने है जम्मिया एक सूरमा, सूरमा सूरमा सूरमा। सूरमा 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 सूरमा। जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनू की आंख में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और। जगह का जोश तूफानी। हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन रीजन में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके चलते भारत को एक सामुद्रिक राष्ट्र माना जाता है। तू शमशीर से दुश्मन पे वार कर, हौसलों को चीर के टुकड़े हजार कर। नाच खेल मौत का जीत की तुम बना, जीत का गुमान कर, प्रहार कर प्रहार कर। देश पर प्रहार है घुमान कर घुमान कर।
तांडव सा युद्ध कर भयंकर घमंड से चलो ना डरो ना गिरो काटा सबक दिल से जीत के यूं चलो घमंड की पुकार है डरो ना डरो दिल दिल में लहर बढ़ चलो घमंड ही तेरे शीश का शिकार है चीर शीश सबक बढ़ चलो घमंड से चलो ना डरो ना दुश्मन का डरेगा धरती सजेगी देश सजेगा हो रक्त गिरेगा माटी तड़ेगी प्यास बुझेगी हो दुश्मन का डरेगा धरती सजेगी देश सजेगा